Very good evening to everybody and a warm welcome to today's session. आज के सेशन हम खास करके सीनियर्स के लिए रखे हैं, हमारे ख्याल कम्युनिटी की सीनियर्स के लिए. एंड today's session is on tips on how to manage acidity, gas and bloating. तो ये खास करके ये सेशन के लिए we have invited Dr. Rahul Shah. So a very good evening to Dr. Rahul Shah. And I will tell you a little bit about Dr. Rahul Shah. He has done his MBBS, MRCP in medicine, gastro and hepatology, and also has done his CCST in medicine and gastro. Dr. Rahul Shah is a consultant gastroenterologist and a hepatologist from Mumbai with 15 plus years of experience. So this is a very easy thing for us to understand, Dr. Rahul, that whenever we see a doctor with so many qualifications, we know that he has studied a lot. And I believe that you have done a lot in gastro and, work with people with acidity and people who have got gas and issues with that. So I would like to also tell you a little bit about the Khayal community, since we have introduced you to the Khayal community and they are new to you. So we are a collection of seniors and elders from all over the country. हम पूरे देश से है, बहुत सारे दिल्ली से है, कलकत्ता से, हैदराबाद से, पुणे से, और हम रोज शाम को मिलते हैं 5:30 बजे. And we enjoy ourselves with different activities, with engaging games. We also learn about technology. We learn about yoga and meditation. And of course, our favorite is when we have experts and doctors like you who come and share some of their precious time, with the Khayal community. So a very warm welcome to the Khayal community. Thank you. Thank you very much, Vikas and the team of Khayal. This is an excellent platform for the elderly community. And I'm very pleased to see that you're doing such great work. I mean, this is the first time I've actually even knew about this thing happening, and I'll be very happy to, help in the future as well. Thank you very much, Doctor. आज का जो सेशन है, in today's session, doctor is going to go ahead and have a casual chat with all our members. He's going to explain the intricacies of our systems and how we deal, how these systems affect us, especially when as you get older. और उसके बाद, if you have any questions or doubts, you are free to ask that. You can raise your hand or you can also put it up in the chat. So I give it up to you, Dr. Shah. Yeah, thank you. Thank you very much. So good evening to everyone. My name is Dr. Rahul Shah. I'm a gastroenterologist and hepatologist practicing in Mumbai in Maharashtra, in Nanavati Hospital and Arogyanati and Criticare, so 3 hospitals. So what I'm going to do is going to take you through 3 concepts which are all interlinked. One is acidity, gas, bloating. These all kind of similar symptoms which are all and every one of us experience throughout our lifetime. So I'll make it interactive. I'll make it a little slow so people understand. I'm aware that there's a half Hindi speaking community and half English. So मेरी talk भी थोड़ी I will change and try and mix it up. तो जैसे मैंने बोला था कि acidity, इसका मतलब क्या होता है? That's the first thing. What sensation क्या होता है patients को? So there are different ways people present to us. मतलब patient बोलते हैं कि छाती में जलन होती है, उसको हम heartburn बोलते हैं. पेट में जलन होती है, उसको हम acidity बोलते हैं. कभी कभार patients को गले में खराश होती है, गले में खट्टा टेस्ट आता है सोते हुए, या कभी कभी पेशेंट्स को रात को सोते वक्त खांसी आ जाती है. ये सब बीमारी जो होती है वो एसिडिटी हो सकती है. मतलब क्या कि ये जो पेट में एसिड बनता है, पेट की काम क्या है कि जो भी खाना पीना खाते हो वो अन्न नली से नीचे जाता है और पेट में एसिड और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करके उसकी पाचन क्रिया होती है. पाचन क्रिया होने के बाद वो छोटी आंत की तरफ खाना जाता है. तो ये एसिड जो है, हम जो बोलते हैं इन इन्वर्टेड कॉमर्स, मुझे एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन हो रहा है, अनकंफर्टेबल गैस हो रही है, वो जनरली पेट के हिस्से से ओरिजिनेट होती है. तो जैसे मैं बोला कि पेट में एसिड बनता है, एसिड ऊपर भी नहीं आना चाहिए नली की तरफ और नीचे भी जाना नहीं चाहिए जनरली. सो जब भी पेट की एसिड अन्न नली के ऊपर आती है तो फिर आपको एसिडिटी, गले में खराश, खांसी होती है.
इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स। तो कभी होता है जब भी आप फॉर एग्जाम्पल शादी में जाते हो, बहुत ज्यादा खाना खाते हो, बहुत हेवी खाते हो, तो क्या कि पेट भरा हुआ होता है, तो उसको उसकी एसिड और खाना ऊपर तक आते हैं, आपको लगता है कि हमें बहुत खा लिया, उल्टी करोगे तो ठीक होगा, नेचुरल सेंसेशन, खाना फ्री में मिलता है तो हम ज्यादा खाते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो कि वी ओवर ईट। When we overeat, the acid and the food comes back up. That is called as acid reflux. So what we need to understand is, first of all, the sensation. So when people come to me with acidity, I need to explain to them what is happening. First of all, acid in layman term मतलब जलन होती है. Simple terms, जलन पेट में होती है, छाती में होती है, पैरों में होती है, wherever it is. That is what acidity होती है कभी-कभार. But for me, एसिड कैन बी थ्री थिंग्स एक्चुअली। जब भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं एसिडिटी के साथ, वो नेसेसरी एसिड की तकलीफ नहीं होती, पेशेंट को सेंसेशन जरूर होता है that they have acidity, burning sensation, but that acid, it could be acid, it could be gas. मतलब कभी कभार गैस जो पेट से ऊपर आती है, means the gas is traveling from the stomach into the food pipe and up, जो हम बोलते हैं ढकार आते हैं, belching, gas, eructation, that is also giving you a burning sensation. सेम टाइम इवन बाइल मतलब पित्त की जो प्रवाह होती है वो गॉल ब्लैडर से होती है। गॉल ब्लैडर की ओपनिंग होती है छोटी आंत में। जब भी पित्त एक्सेस होता है, मतलब यू हैव एक्सेसिव बाइल, वो एक्सेसिव बाइल से भी यू गेट अ बर्निंग सेंसेशन, बिकॉज़ बाइल इज अ केमिकल, इट्स एन एसिडिक केमिकल। तो बाइल इफ इट गोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द स्टमक तो भी बर्निंग होता है, बाइल ऊपर आता है तो भी एसिडिक सेंसेशन होती है। सो व्हाट पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं, they tell me acidity, जलन होती है, तो हमेशा मैं पूछता हूँ what is your symptom? कभी होता है खाने के पहले, खाने के बाद, what is happening to you? So acidity is very very important to know. I need to evaluate कि patient को acidity हो रहे या गैस से बन रहा है कि पित्त या बाइल से तकलीफ हो रही है. So it's very important for me to establish कि क्या हो रहा है. So this is about understanding what your body is telling you. The next thing for us is to see what are acidic foods. Essentially, acidic foods, most of us know what it is, but we don't know key simple foods like ginger, garlic, of course spices like green and red chilies are extremely acidic and spicy. Anything which increases your spice levels in your food tend to cause increased acid production. So we have to remember that certain things cause acidity. Simple misconceptions, for example, milk. Milk in the past was an excellent acidity regulator, but in the current decade, अभी क्या हो गया कि milk में काफी सारे fertilizers, pesticides, preservatives add करते to increase the breast milk production of the cows and buffaloes, कि अभी milk की जो quantity और quality है वो change हो गई है. So what we find that people tend to become allergic to the cow or milk protein or buffalo milk protein. And they also, instead of getting better with the acidity, they start producing gas, and the gas gives you acidity and discomfort. So जब भी patient मेरे पास acidity के साथ आता है, there's a number of things I ask them to regulate. So small frequent meals, मतलब खाना जो खाते हो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे बैठ के आप पूरा पेट भर के खाना खाते हो तो तकलीफ होती है, खाने के बाद आपको सोना नहीं है. Don't eat and sleep. Very very important. आपको gap, if you are diabetic, if you're older, it's very important कि जो पाचन क्रिया young patients की 2-3 घंटे में होती है, the older people takes 4 to 5 hours. So if you eat a heavy meal at 9 o'clock in the evening and you sleep by 11, then you'll get everything becoming acidic, gassy. So remember, there should be a gap between eating and sleeping. Eat little less than your full capacity. 10% कम खाइए. If you're having 4 रोटी खाते हो तो have 3 rotis and then eat again after 3 hours. Then it's very important that you have a meal which is not very acidic. So spices like green chilies, red chilies, ginger, garlic, a lot of things like citrus fruits can give you allergies and acidity. वो चीज खानी नहीं होती है. कभी कभार heavy dals जो होते हैं, राजमा, छोले, चना, they also give you a lot of gas production and acidity because they're very heavy to digest. So I'll take a brief pause because is that something which you expected? Yes. Acidity, we talk about acidity, it's not always that you need to have an endoscopy. मैं कभी किसी की endoscopy नहीं करता हूँ पहले. First I say you take
diet changes. Avoid the, have small frequent meals. Have a regular meal. So ऐसे नहीं कि एक दिन 2 बजे खाना खाया, एक दिन 6 बजे खाना खाया, ऐसे नहीं चलता है. What happens is the stomach is an automatic organ. So it produces acid at fixed times. Say example, 8 a.m., 2 p.m., 8 p.m. So if you eat one day at 8 a.m., then the next day at 10 a.m., then रात को 12 बजे, 1 बजे, तो आपकी stomach की acid production haywire चली जाती है. It becomes irregular acid production. When you have irregular food times, late nights, then it creates trouble. If you have too much of caffeine, too much of alcohol, मतलब ज़्यादा red wine ले ली, आपने ज़्यादा चाय कॉफी ले ली, then it triggers a lot of acid production. तो ये सब चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है. You have to regulate what you eat. If you regulate what you eat, most often patients don't need to have an endoscopy या आगे ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती है. तो there are 5 indications कि मैं किसी की एंडोस्कोपी करता हूँ या I do additional test कि पेशेंट्स को बार-बार एसिडिटी होती है तो क्यों करूँ मैं टेस्ट. पहले मैं डाइटरी एडवाइस देता हूँ. You follow the advice, come back to me in 4 weeks and see what happens. 5 things. If the patient is more than 45 years old, उनका वेट लॉस हो रहा है, इफ कि मैं दवाई देता हूँ 4 हफ्ते की और एसिडिटी कम नहीं होती है, वेट लॉस हो के साथ आपको कोई एपेटाइट लॉस हो रहा है, कभी आपका खून कम हो जाता है, मींस योर ब्लड बिकम्स लेस, और इफ यू हैव डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. नली जो होती है इट्स अ वेरी नाइस ऑटोमेटिक सिस्टम. ऊपर एक वाल्व होती है, नीचे एक वाल्व होती है. सो व्हेनेवर यू ईट और ड्रिंक, इट गोज डाउन इन 1 second. It's only a transit pipe from the food, from the mouth to the stomach. So whenever any patient who has difficulty in swallowing, मतलब खाना अटकता है या slow जाता है, you must do an endoscopy or you must seek help. That's very, very important. So weight loss, blood कम हो जाता है, appetite loss होती है, persistent acidity होती है, you don't feel comfortable, तो फिर आपको endoscopy जरूरत होती है. By and large, endoscopy हम rarely करते हैं कि अल्सर ये जमाने में बहुत अनकॉमन होते हैं, क्योंकि क्या कि इस जमाने में सब लोग एंटासिड लेते हैं ओवर द काउंटर, दवाई लेते हैं जीपी के थ्रू, तो अल्सर की बीमारी बहुत अनकॉमन है. कैंसर इज वेरी कॉमन. सो वो आपको ये सब 5 चीज ध्यान में रखनी होती है. सो यही इंटरेक्शन गैस के साथ होता है. जो गैस कहाँ से होता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन ओल्ड एज इसकी गैस होता है. सो गैस इज 3 थिंग्स you have to remember. One is कि जो आप खाना पीना खाते हो इससे गैस बनती है. So 5 common things which produce gas in the food. Dairy products, then there is wheat. Wheat की allergy भी होती है या wheat की intolerance होती है. The wheat is highly gas producing heavy substance. छोले, राजमा, चना. और कई फ्रूट, फॉर एग्जांपल मैंगो, सीताफल, चीकू, ये सब फ्रूट्स क्या होते हैं, अंदर पेट में जाके फर्मेंट होते हैं. ये बेसिकली शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं ये फ्रूट में. तो शुगर जो जाती है पेट में आंतड़े में, वो बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट होकर गैस बनाती है. तो जैसे आप हेवी खाना खाते हो, आपको ढकार होती है गैस की या फिर नीचे से गैस निकलती है, दैट्स बिकॉज यू हैव इनडाइजेशन. एक्स्ट्रा खाना गया है, वो जो बैक्टीरिया खा लेती है वो गैस बनाती है. सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन रीजन वाई गैस बनती है कि आप कुछ गलत कर रहे हो. छोले, राजमा, चना, गेहूं और दूध, मोस्ट कॉमन रीजन कि गैस बनती है. उसमें से टॉप 2, जैसे मैंने पहले बोला, दूध की चीज, दूध की प्रोटीन की एलर्जी बहुत कॉमन है, और गेहूं की एलर्जी इज इनक्रेडिबली कॉमन नाउ इन दिस डे एंड एज. सो फर्स्ट थिंग टू अवॉइड फॉर गैस इज दीस 5 थिंग्स. पीपल टेंड टू हैव एरिएटेड ड्रिंक्स, मतलब सोडा पीते हो, थम्स अप, स्प्राइट, वो सब चीज से भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पेट में जाता है और पेट से निकल जाता है. कभी कभार पेशेंट्स हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू अ बॉटल. So when you drink water through a bottle, there's a inadvertent air which goes into your stomach because you're having water from a bottle. You must have water through a glass, not through a bottle. If you have a water through a glass, that's more physiological. Nobody knows that. This is Salman Khan ki ad hai, wo thumbs up pita hai. That is a wrong thing. That will immediately produce gas for you. It'll go into your stomach and come back up. So you should avoid having a bottled water. Have a water in a glass. Avoid aerated drinks. Avoid these 5 things. The most common reason for gas production. Second चीज, कभी कभार पेशेंट्स को पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, H pylori करके. वो H pylori की इन्फेक्शन के वजह से भी गैस बनती है. That is a unusual cause. तीसरा very important cause है गैस का is patients having constipation.
तो क्या होता है कि एल्डरली एज में जैसे आपकी एज होती है, इन लेडीज हार्मोन चेंजेस होते हैं, जेंट्स में एक्टिविटी कम हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, तो आपकी पेट की और आंतड़े, छोटी बड़ी आपकी नसें जो होती है, द नर्व्स which supply to the intestine and stomach, they become a little slow and a little weak. So when that happens, your body tends to become constipated. So you're passing stool once a day. जैसे एक बार आपको स्टूल होती है, आपको जोर करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है पास करने में, कभी कभार आपको आगे झुकना पड़ता है. That means there's a problem with your intestinal emptying. तो जब भी आपके पेट आंतड़े में गंदगी भर जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं इन द इंटेस्टाइन, सो बैड बग्स इन द इंटेस्टाइन, they start to multiply, and those bad bugs will also cause gas production. So you have to regulate three things. First of all, you regulate your food intake. जो चीज गैस बनती है, एसिड बनती है, वो अवॉइड कीजिए. Number two, avoid getting constipated. So that's very, very important. If you're getting constipated, then you must take something to regulate the water content in the stool and to have a good movement. उसके लिए very simple. If you want to regulate your intestines, natural चीज में you can take some flax seeds, जो अनसी बोलते हैं, very good to have a good normal motion. Then there are prunes. Prunes मतलब सूखा आलू बुखारा, excellent for stool regulation. And of course, regular things like lots of water, lots of fiber, fresh leafy vegetables. जो भी green vegetables हैं, excellent for iron, excellent for nutrition, excellent for bowel this thing. जो लोग non-veg बहुत खाते हैं, for example, certain communities in the north have a lot of non-veg. If you're having non-veg, excellent source of protein. But at the same time, there's no fiber inside that. So you must take a lot of water with it, a lot of fiber. So खाने के साथ take beetroot, गाजर, ककड़ी, टमाटर, take any of these salads with you. If you can't take that, I tell my patients कि आपसे नहीं होता खाने का, you make that into a juice. Take some carrot, beetroot juice, put some आपको चाहिए तो broccoli या फिर spinach या मतलब पालक, उसके एक juice कर लीजिए, तो it becomes into a nice concoction of greens and gives you a lot of water and fiber inside. That will help you to regulate the water in the intestine, help you to pass stool. So again, recap: to prevent acidity, acidic foods, prevent gas, don't take heavy foods. Age होती है तो certain चीज की पाचन क्रिया नहीं होती है, बहुत weak हो जाती है, especially if you're diabetic, if you're hypothyroid, मतलब कि underactive thyroid होती है, blood pressure होता है, retirement होती है, physical activity कम हो जाती है, तो इससे आपकी metabolism कमजोर हो जाती है. So it's very important कि ये सब चीज से आप metabolism को आप stimulate कीजिए. So increase your metabolic level with physical activity and also foods. So superfoods are things like all the greens, all the seeds, melon seeds, pumpkin seeds, flax seeds are very, very good to regulate the intestinal motility and fiber. So इसके बाद if आपको अभी भी गैस होता है, food alteration किया, आपने stool regulate किया और H. pylori infection भी नहीं है, तो then we come to other reasons why gas होती है. कभी कभार आप कोई दवाई लेते हो, इट इज वेरी कॉमन ओल्ड एज की आप कोई भी कारण से दवाई लेते हो, सो दवाई के कारण से भी गैस होती है. कॉमनेस्ट मेडिकेशन इज अ डायबिटिक मेडिकेशन कॉल्ड मेटफॉर्मिन, जिससे पेट की एसिड बढ़ती है और थोड़ा गैस बनता है. तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हम उसकी डायबिटीज की दवाई थोड़ा ऑल्टर करते हैं. वी ऑल्टर द मेडिकेशंस. समटाइम्स मेडिकेशन कॉल्ड statins to lower the cholesterol can also cause gas and discomfort. We change that also sometimes. And then after all these interventions, if you don't get better, then we have to do a couple of tests to see whether your gut is harboring bad bacteria. So if your gut is harboring bad bacteria, मतलब कि गंदे बैक्टीरिया जो आपके पेट में घुस जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें physician से मिलके we have to start some basic therapy and basic treatment. So I'll take a break there. I think there are some questions coming up on the screen. Yes, and Dr. then I'll see you again. So Dr. Shah, first of all, I would like to thank you for giving so much of clarity. आपने इतने अच्छे तरह से हमें एक्सप्लेन किया कि एसिडिटी कैसे होती है, क्यों होती है, और ये बेसिकली जो हमारे हैबिट्स है, जो हमारे खाने की हैबिट्स है, या हमारे खाने के टाइम के हैबिट्स है, या हम जो चीज़ें खाते हैं, कभी कभी हम ओवर ईट करते हैं, तो उसके वजह से हो जाता है. और ये ऑल्सो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि
अब बहुत बार हम बोलते हैं कि आदमी तो जीता है खाने के लिए, और हम फिर ऐसे सोचते हैं मैं खाऊंगा नहीं तो क्या फायदा, और मुझे इतने सैलेड जैसी चीजें खाने पड़ती है, मुझे बकरी के जैसा घास जैसे लीफी वेजिटेबल्स खाना पड़ता है। बट आई एम श्योर देयर इज अ मॉडरेशन पार्ट टू इट। उसमें हम ये सब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे आपने बोला है। अगर आपको नॉनवेज भी खाना है तो उसके साथ सैलेड भी खाइए। Correct, correct. अगर आपको अपना टाइमिंग मेंटेन करना है तो आप थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लाइए। Hmm. अगर आपको और Correct. खाना भी खाना है तो आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में अलग अलग खाइए, क्योंकि ओरिजिनली अगर हम मैं अगर मैं सही हूँ तो ईटिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ये एक कल्चरल चीज है, क्योंकि हम जब आदि मानव थे तो हमको जब कुछ मिलता था हम खाते थे, उसके बाद हम कुछ हंटिंग करते थे और कुछ खाते थे। वी वर हंटर गैदरर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Correct. Absolutely. अब हमने कल्चरली वी हैव सेटल्ड डाउन एंड वी हैव made these rules that we should have breakfast and we should have lunch and we should have a tea party also, which is not existent. So we have tea cakes and biscuits, and those things are not very good for our digestive system, and I Yeah. don't think our digestive system has kept up with our culture. So maybe that is also a lifestyle change that we need to do. Yeah. So thank you for that explanation, or especially the biggest eye opener for me is that I will no longer drink water from a bottle directly, क्योंकि मुझे भी पानी पीने की आदत है। मैं दिन में एटलीस्ट 4 बॉटल पीता हूँ, बट मैं बॉटल से ही पीता हूँ। तो आई थिंक आई विल लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव मेड, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर एल्डर्स आल्सो रियलाइज दैट कि these are simple things, simple changes, incremental changes that we can make to improve the quality of our life. Yeah. So we will take a couple of questions from our members, Yeah. and अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है आपको डॉक्टर शाह से अभी पूछना है, तो यू कैन रेज योर हैंड, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक फ्रॉम मिस्टर कमल मनिक। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? Fine, fine, Navikas. How are you? ग्रेट। योर क्वेश्चन फॉर डॉक्टर शाह। Yeah, I have a question. Good evening, doctor. Hi, good evening. Yeah, it's a pleasure talking to you. Thank you. Actually, I have acidity and gas issue, you can say from childhood. And I try and avoid the food you have been talking about. But sometimes you go out and eat in a hotel, and that night I cannot sleep. It keeps coming up. Yeah. And then I start walking for 15 minutes or drink anti-acid, and then probably, with great difficulty, I get sleep. So And for me, this is the regular feature, or the medicines I take because I'm diabetic, and also cholesterol and blood pressure medicines I take. So sometimes because of that as well, the medicine, the acidity comes. And I have sometimes, if the oily food is there, the heartburn is there. yeah. Or most of the time, I feel the food is coming up. Yeah. So see, And- what I Yeah. suggest is very strongly. I told you before, Ki, what happens if you're a diabetic, older age group, Yeah. relatively your activity is less than when you were working. And when Right. you eat in a hotel, no matter whatever you eat or drink, it's going to be more oily, more spicy, and heavy. Yes. In which case, as a diabetic, you're going to take, instead of 3 hours to digest, you're going to take 5 to 6 hours. There's Yeah. no way you can have a gap, say 8, 9 o'clock you eat, you'll not be sleeping at 3 in the morning. So you find that you'll feel much better after 2, 3 in the morning. Correct? Yeah. Because That's right. I just sleep said- 2:30, 3 o'clock. So exactly. So you have to respect your body. The body is not what it was in the 1970s. The human being has evolved. Our food habits. If you were talking about in your childhood, you were having roti, sabzi, dal, chawal. You never had anything outside. अभी क्या कि होटल में जाना है, ये भी खाना है, पनीर भी खाना है, चिकन भी खाना है, heavy खाना है, ice I'm cream. vegetarian by birth. Whatever. What I'm saying is कि Yeah. अब जो भी खाते हो, it's going to be heavy. पनीर है, ice cream है, sweet. Yeah. So if you can just modify your diet, as you said, you go to a hotel, you eat, don't have a lot of garlic, onions, chilies, garlic, etc. And if you eat 10 to 20% less of what you're eating, you see the difference. You feel better. No, I never eat any chili at all. My home, they know they don't put chili at all in my food. And Yeah. still the problem exists. And
could you suggest something which can give me relief? Because these are, I mean, occasional going outside, but this problem keeps occurring even with mild food I eat. You should try an antacid prokinetic combination. Okay. Which will take it before dinner for 10 days. You'll feel much better. What is that, doctor? It's a prokinetic, means it'll help you to passion kriya increase kar dega wo. When you take it, it'll help you digest much faster. Instead of 5-6 hours, it'll do it in 2-3 hours. So you won't have trouble then. Could you just send a message or something? I didn't get you properly. I'll send you later. Yes, we'll do that. Mr. Manik, I will definitely take that information and pass it on to our members. Thank you. Thank you. Okay. So this is something I need to take even before I go for an iftar party, because that is what I become at the end of it. Even I am not able to sleep. So we'll take the next question from Sushila Dagaji. Namaste, Sushila ji. So I'm not able to unmute you right now. I'll go to Hemlata ji. Good evening, Hemlata ji. Namaste. हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर राहुल. गुड इवनिंग ख्याल से. डॉक्टर, एक आपने बोला कि बैड बैक्टीरिया हो जाता है, तो आफ्टर हम लोग क्या डाइट लें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा गुड बैक्टीरिया बढ़े? Yeah, it's a very good question actually. So पहले के जमाने में we should never recommend a probiotic. So first of all, जो चीज से बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो सबसे important. So the foods which are heavy to digest are automatically going to cause bad bacteria in our gut to multiply. So दो concept है. एक तो कि खाना जो खाते हो वो heavy है पाचन क्रिया के लिए, जो heavy proteins होते हैं, जैसे मीट होती है, छोले राजमा चना, that stays longer in the gut, मतलब और टाइम जाता है और उसके बाद वो बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, तो और तकलीफ देता है. और सर, हम कितने दिन में राजमा वगैरह मतलब मंथ में एक बार लें, ज्यादा नहीं लें? हाँ, ले सकते हो, पर मेन थिंग इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए. दिन में लें? हाँ, दिन में लीजिए, रात को मत लीजिए. और ये सब क्या, कभी ये कॉन्सेप्ट भी है और एक लीकी गट कॉन्सेप्ट, मतलब कि बैक्टीरिया ये सब हेवी प्रोटीन से थोड़ी लीकी हो जाती है. तो आपको बैक्टीरिया को ठीक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप दही इज अ नेचुरल प्रोबायोटिक. तो आप दही की चीज इंकॉर्पोरेट करोगे सभी चीज में तो यू विल फील मच बेटर. देन यू गेट आर्टिफिशियल, मतलब कि हम जो लाइव बैक्टीरिया है उसको हम कैप्सूल में डाल के या पाउडर में डाल के बेचते भी है कंपनीज. So this is a new concept to give everybody a probiotic alongside your antibiotic alongside your antacids. It really helps you. सर, एक बात और, मेरे हस्बैंड को ना सर 3 साल से बाईपास हुई है सर. नाइट में वो जब भी खाना खाएं 7 o'clock 9 o'clock, आधे घंटे के अंदर उन्हें नींद आने लग जाता है. ऐसा क्यों? नहीं, नींद तो क्या, that is a different thing. सर, घंटा डेढ़ तो बीतना चाहिए ना एटलीस्ट. नहीं, what happens, उन्हें होता है 1 घंटे में ही सो जाऊं मैं. जब भी आपका ब्लड जो होता है ना पूरा पेट के तरफ जाता है तो इट्स वेरी नेचुरल टू, कोई भी इंसान जो हैवी खाना खाते हैं उनको नींद आती है क्योंकि आपका ब्लड पेट में डाइवर्ट हो रहा है पाचन क्रिया के लिए. तो जब भी ब्रेन में ब्लड कम हो जाता है तो नींद आती है. दैट इज वेरी स्टैंडर्ड थिंग. जो लोग की बाईपास होती है या फिर ओल्ड एज होती है, इट इज वेरी कॉमन अगेन. सर 20 इयर्स से डायबिटिक भी हैं वो. हाँ, इसलिए आपको इसलिए तकलीफ होती है. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू हेमलता जी. we'll try to speak to Sushila ji again. Namaste, Sushila ji. Sushila ji, I'm trying to unmute you. Okay. Hello. Hi, Yes, namaskar, doctor sir. नमस्कार विकास जी. थैंक यू. नमस्कार डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, ये सच था कि खाना खाते से थोड़ा सा वॉक करना चाहिए. हम लोग की आदत है खाना खाते हैं सो जाते हैं या बैठे रहते हैं, तो उससे भी ऐसा थोड़ा हैवी लगता है. और आप जिससे एज होती है ना, ऐसा की पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है. आप खाने के बाद तुरंत टीवी के सामने बैठ जाओगे तो तकलीफ तो होने वाली है. तो बेटर है कि जनरली हम ब्रिस्क वॉकिंग रेकमेंड नहीं करते हैं, पर जैसे हम बोलते हैं कि शाम को सैर कीजिए, वॉक अ लिटिल बिट, मतलब कि खाना के 1 घंटे के बाद आप थोड़ा हल्की सी सैर करोगे तो भी मच बेटर फॉर योर हेल्थ, मच बेटर. और कितने स्टेप चलना चाहिए हम लोग को? जैसे 60 अबव 60, जैसे मैं 67 हूँ, मुझे दिन भर में कितने स्टेप चलना चाहिए, कितना? नहीं आंटी, ऐसे स्टेप्स नहीं होते. देयर आर 2 थिंग्स कि अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस यू शुड वॉक एज मच एज योर बॉडी कैन टेक एंड योर हार्ट कैन टेक. सो वी एम कि जैसे आपकी एज होती है 70, तो वी एम फॉर अ हार्ट रेट ऑफ 200 माइनस एज, मतलब कि आपकी 70 तो 200 माइनस 170 करते हो तो 130 हार्ट रेट होनी चाहिए.
पर रात को नहीं, ये सुबह की बात कर रहा हूँ, एम्प्टी स्टमक की। तो हार्ट रेट शुड कम टू अराउंड 130, तब तक आपको चलना है। तो उसके बाद आपकी हार्ट ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, तो कम टू हार्ट रेट 130 पर रेस्ट कीजिए। पर अनब्रिस्क वॉकिंग, बहुत आप जिस सैर करोगे, देयर इज नॉट वेरी गुड एक्सरसाइज। तो थोड़ा फास्ट चलिए, फिर स्लो चलिए, फास्ट चलिए, स्लो चलिए, हाउ मच एवर योर बॉडी कैन टेक। और बीच बीच में थोड़ा बैठ भी सकते हैं डॉक्टर साहब, एकदम फास्ट नहीं चल सकते। नहीं, that is absolutely fine. Whatever your body can take, you have to adjust according to your age, your knees, your heart, your diabetes, etc. अभी दोनों नी की सर्जरी हुई है, 6 months हुए हैं, तो थोड़ा तो चलने में इजी है, बट एकदम फास्ट नहीं चल सकते। नहीं, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ आराम से करना है, कुछ जल्दबाजी मत कीजिए आप। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। My pleasure. Thank you, Sushila ji. We wish you a speedy recovery also with your knees. Thank और जैसे डॉक्टर ने कहा है कि जब तक आपको लग रहा है आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड इट डजंट कॉज एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस या फर्दर पेन टू यू, आपको उतना ही करना चाहिए। और ऐसे भी अगर आपको कोई एक्सरसाइज या योगा करना है, हम हमेशा हमारे ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स को कहते हैं कि ऑलवेज कंसल्ट विद योर ट्रीटिंग डॉक्टर एंड ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू what is how much you can push your body, क्योंकि बहुत लोग we have some of our members we have one of our member who's a bodybuilder at the age of 65. He is a bodybuilder and he has excellent physique, but we cannot compete with him because he has been training his body for over so many years, for his entire lifetime. So we need to look at our own body and then try to figure out what is best for us. तो अगला क्वेश्चन मैं दीपक वाधवा जी के पास जाके देता हूँ। नमस्ते दीपक जी। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते। मैं 75 साल का हूँ। जब भी मैं कुछ गोली टेबलेट खाता हूँ या खाना खाता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ, तो अंदर से गड़ करके गैस निकलती है। ये क्या चीज हो सकती है? तो जैसे आप पानी पीते हो तो ही होता है, बाकी नहीं होता है ना? वैसे नहीं होता। कभी कभार टेबलेट लिया कोई, उसके साथ पानी पिया, उसके कुछ 1-2 मिनट के बाद ही वो गैस निकलनी शुरू होती, गड़ करके। समझ गया। और खाने के साथ नहीं होता ना ये? नहीं, खाने के साथ नहीं होता। खाने के ऊपर जब पानी लिक्विड पियोगे ना कोई, तब होता है। तो अंकल जैसे हमको समझाया, कभी कभार ये जो अन्न नली है ना, अन्न नली और सांस की नली एक के पीछे एक होती है। तो जब भी आप खाना पीना खाते हो, सांस की नली बंद होनी चाहिए, और जब भी सांस लेते हो तभी खाना बंद होता है, राइट? तो जब भी आप पानी पीते हो, आप पानी बहुत फास्ट पीते हो या बोतल से पीते हो, तो ये जो अन्न नली है उसकी ओपनिंग होती है, पर तभी भी आपका ब्रीदिंग तो चालू ही होता है। तो कई पेशेंट्स में क्या कि वो सांस की अन्न नली से हवा घुस जाती है। तो जैसे ही हवा घुसती है पानी के साथ, जनरली लिक्विड के साथ ही होता है ऑलवेज, तो लिक्विड साथ पानी जब अंदर घुसता है, वो पानी हवा जो घुसती है उसकी ग्रेविटी बहुत कम होती है, वो हवा की टेंडेंसी है कि ऊपर आ जाए। तो ये वाल्व जो आपकी टाइट होती है, तो जो हवा घुसती है वो तुरंत ऊपर से निकल जाएगी वापस। कभी कभार आपको हाइटस हर्निया होता है, पेट में हिस्से में हर्निया होता है, तो वो हवा जो है हर्निया में घुस के फिर जब आप खाना बंद करते हो वो ढकार होके निकल जाती है। पर उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी होती है। जो पानी पीते हो, जैसे मैंने विकास जी को पहले बोला कि पानी जो पीते हो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत फास्ट पियोगे तो तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि जब आप गोली खाते हो आपको टेंडेंसी है कि आप थोड़ा मुंह ऊपर करते हो, फिर 1-2 घुट लेते हो, फिर आपकी गोली अंदर जाती है, करेक्ट? तो उसमें अगर ये सेम चीज चाय में नहीं होगी। खाने के बाद भी अगर मैं 2 घूंट गर्म पानी पीता हूँ जनरली, तो वो 2-3 उसके बाद भी फिर वही हालत होती है। पानी के साथ ही होगा और चाय के साथ नहीं होगा, आपने देखा होगा। नहीं, चाय के साथ नहीं होगा, चाय के साथ। क्योंकि चाय आप धीरे धीरे सिप करते हो, मैं आपको बोला याद है पहले कि आप सिप करोगे धीरे धीरे, कुछ तकलीफ नहीं होगी। आप ऐसे जल्दी में पानी पियोगे या टैबलेट को घुसाने के लिए करोगे तो आपको जरूर होगा। तो पानी जो है आप खाने के बाद एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स गैप दीजिए, पहले तुरंत मत लीजिए, और धीरे धीरे ग्लास में पीजिए आप, जैसे आप चाय पीते हो। जनरली ग्लास में पीता हूँ, सिर्फ टैबलेट वगैरह लेनी उसके साथ ग्लास में पीता हूँ। धीरे पीजिए, इन केस भी थोड़ा हर्निया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। राइट सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर। थैंक यू मिस्टर वाधवा। डॉक्टर, आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जैन जी। नमस्ते, गुड इवनिंग। हेलो। हाय, गुड इवनिंग मैम।
Good evening, sir. Sir, on behalf of my father-in-law, I'm speaking. Sure. Okay, sir. Can I speak in Hindi? Yes, Of you can course, speak in Hindi, you can speak in English. Yeah. Whatever languages we know, we will try to answer. Doctor is there for you. Okay. सर एक्चुअली हम लोग एक्चुअली जैन है सर, तो हमारे फादर इन लॉ या हमारे घर में सब लोग हम गर्म पानी पीते हैं बॉईल करके। तो फिर भी हमारे फादर इन लॉ को फिर भी गैस फॉर्म हो रहा है सर। जैसे हार्ट पेन होता है, ऐसे चेस्ट पेन होता है, उस एरिया पार्ट में पेन होता है, तो उनको लगता है कि कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, ऐसा बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। तो सी, जैसे मैंने समझा, वी नीड टू फाइंड कि उसकी जड़ क्या होती है। हाँ। सो ये पानी जो पीते हो गरम, तो वो तो बहुत ही इश्यूज है। पर जब भी गैस की तकलीफ होती है, तो आप सबको होती है घर में, ऐसे आप बोल रहे हो, करेक्ट? इवन आई एम आल्सो गेटिंग सर। उसके लिए हमें पहले तो ये 5 चीज तो ये 5 चीज बंद करनी पड़ती है। जैसे दूध की चीज है, गेहूं है, छोले, राजमा, चना, ये कंप्लीटली बंद कर दीजिए पहले। उसके बाद ठीक नहीं होता है तो फिर हम कभी कभार एक H pylori करके इन्फेक्शन पेट में, उसकी टेस्ट करते हैं, और वो भी नेगेटिव आती है। जो इन्फेक्शन टेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, स्टूल में भी कर सकते हो, या एक सिंपल ब्रेथ टेस्ट आती है। और इसके बाद भी नहीं होता तो फिर हम एक बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की एक टेस्ट करते हैं, और इंटेस्टिनल फ्लूइड रेगुलेशन, जैसे आपको पहले समझाया, आपकी टेंडेंसी कॉन्स्टिपेशन की होती है या पेट साफ नहीं होने की, तो हम उसको भी रेगुलेट करते हैं एक सिंपल दवाई देके। और उसके बावजूद नहीं होती है तो फिर हमें दूसरे को टेस्ट करने पड़ते हैं। बट बाय एंड लार्ज ये गैस बीमारी नहीं होती है। गैस की बीमारी कभी हम इन्वेस्टिगेट करते जब भी उनके साथ वेट लॉस होता है, पेट में बहुत दर्द होती है, या फिर आपको कुछ स्टूल में ब्लड या म्यूकस निकल रहा है, मतलब चिकनापन, तो फिर हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। मुंह में छाले नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, वेट लॉस नहीं है, स्टूल में कुछ ब्लड या चिकनापन नहीं है, तो गैस की बीमारी 99% ऑफ द टाइम्स कि आप कुछ गलत कर रहे हो, खाने में, पीने में, सोने में, या स्टूल रेगुलेट करने में। Sir, one question, sir. Sir, you are saying, sir, right, sir, but we are totally we have avoided wheat, sir. In English, we are eating a jowar, oats का आटा, उससे रोटी बनाते हैं, oats या बाजरा या मक्की, alternate days. And फिर भी हमारे डॉक्टर ने सर, हमारा वो डॉक्टर नाड़ी व्यवस्था आपको आइडिया होगा सर? हाँ, देखते सर। तो उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट किया, एक तो सात्विक चूर्ण लेते हैं, एक कूडोस करके चूर्ण लेते हैं, उससे ठीक हो रहा है। लेकिन कभी कभार स्टॉप अप हो जाते हैं। चूर्ण जैसे बोल रहे, चूर्ण का काम क्या है कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी और फ्लूइड रेगुलेशन का है, इसलिए आपको चूर्ण लेने के बाद ठीक लग रहा है आपको। चूर्ण लेने के बाद ठीक हो रहा है। लेकिन अभी डेली वो कंटिन्यू उनको पसंद नहीं आता लेने के लिए। No, natural चीज कीजिए। What you can do, natural, take flax seeds जो होती है, unseed flax seeds, prune। रेगुलर वो फ्लैक्स सीड, इवन क्या जौर की रोटी में हम लोग फ्लैक्स सीड्स थोड़ा ऐड करके ही पिसाते हैं। अभी चना भी थोड़ा लाइट चना, वैसे मल्टीग्रेन आटा। तो try चना कर दिया। See, try these things। ओके सर, अभी हम लोगों को सनसेट के बाद हम लोग खाना भी नहीं खाते, और इवन वी डोंट ड्रिंक वाटर आल्सो सर। तो इसके कारण भी होता है क्या? So lots of water, lots of fiber, and you need to take less gassy foods। मतलब less gassy मतलब क्या, जैसे मैंने बोला है पहले। So आप 5 चीज तो है, दूध, गेहूं, छोले, चना। तो उसके साथ गैस बनाने की काफी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो से बहुत गैस होती है, पेट में तकलीफ होती है, सीताफल से होती है, चीकू से होती है, और 2-3 फ्रूट्स से भी होती है। Which fruit we can eat, sir? So that you should, if you have an internet access, Google Pay, you try the word low FODMAP। ये बहुत ही important concept है to all the community। There's a concept called FODMAP। I'll tell again, FODMAP, FODMAP। Okay, so FODMAP stands for fermentable sugars, essentially। पूरा जो नाम है is for fermentable sugars। तो अभी क्या होता है कि जो भी शुगर्स इंटेस्टाइन में, पेट में जाके फर्मेंट होती है, मतलब कि इट बिकम्स इनटू गैस, वो गैस बनाती है। कॉमन इंटेबेट टाइप ऑफ यू नीड टू हैव अ लो फॉडमैप फूड। हाई फॉर वाटरमेलन इज अ हाई फॉडमैप, छोले, राजमा, चना, दूध, आइसक्रीम, ये सब हाई फॉडमैप फूड है। व्हाट इज लो फॉडमैप? सिट्रस फ्रूट,
blueberries hai, berries hai, bananas hai, oats hai. These are low FODMAP foods. If you have a low FODMAP food, the gas also become less automatically. Sir, even dragon fruit also is acidic, sir? Dragon fruit is medium. It's not high or low. But highest Avocados, acidic, sir? yeah. Sorry, come again. Avocados. Avocado is very good. Avocado is very good antioxidant. A little heavy to digest sometimes because it's got a lot of fat, good fat inside. So everything in limitation is good. So, you know, you'll be surprised when you read this low FODMAP diet on the internet. You find a number of things that you eat, like gobi hai, cauliflower hai, watermelon hai, mango, sitapal, chickus. These are very, very high gassy foods. Peas hai, जो peas मतलब जो garden peas बोलते हो, कभी कभार तूर दाल भी देती है. So there be a whole list of food जो आपकी staple diet में मतलब कि आप रोज करते हो, उसमें आपको तकलीफ हो रही है. So there's a very extensive list. तो ये extensive list जो है आप you should read it on the internet. It's called low FODMAP. Very very important. I can tell you 50% people जो मेरे पास आते हैं वो गलत खाना खाते हैं, इससे acidity होती है, gas होती है, तकलीफ होती है. So I cannot give you an extensive list, but I can tell you some suggestions. Fruits में watermelon, mangoes, then sitafal, chickus are very heavy. All the berries, all the citrus fruits are safe. Melons are safe. Then you have in vegetables में you have heavy things में gobi है, कभी कभार broccoli वो भी बहुत gas बनाती है. It's a very good food but it produces gas. उसके साथ कभी कभार all these lentils, छोले, राजमा, चना, and there are a number of other foods. Cheese है, वो सब चीज आप देखो, you'll find a whole list on the internet. That's great information, Dr. Shah. So we will definitely try to introduce this concept of looking into the FODMAP with the community. तो इसके बारे में तो हमें जरा भी पता नहीं था. It's great to know about this, and also, you know, maybe a little while later, if we have the time, we can also talk about the leaky gut syndrome. तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं. But I still have a lot of community members who have questions. और अब हमारे पास approximately 20 minutes है. So I'll try to accommodate as many as members as we can. अगर हम ये नहीं कर पाए तो we would definitely like to call Dr. Shah maybe on another day, and we would also like to take some contact information from him so that we can go ahead and, you know, meet him personally and consult with him personally. Okay, so I will take the next question from Lata ji. Namaste, Lata ji. Can I just give one point before? Yes, doctor. So when I had some questions flash up, दो चीज I saw on the flash up. One is that somebody asked a question कि there's a big list for don'ts. I understand. So most important कि जो चीज अपनी body को suit नहीं होती, that is more important. I can give you suggestions कि ये चीज होती है. Then it is up to your body कि आपको कौन सी चीज suit नहीं होती. So I'm not saying कि you stop everything. You find out which is the most important irritant. Okay? Correct. Okay. So like जैसे डॉक्टर जी कह रहे हैं कि आपकी बॉडी एकदम यूनिक है. ओके, आपकी फिजियोलॉजी भी बहुत यूनिक है. और अगर आप ये भी देखोगे कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया कल्चर है वो भी बहुत यूनिक है. तो जो जनरल चीजें हैं वो दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. आपको क्या करना है, अपने बॉडी के बारे में जानना है, और एक्सपर्ट आपके बॉडी के एक्सपर्ट कौन है? आप ही है. तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग चीजें खाने पड़ेगी, और उसके साथ आपके पास क्या रिएक्शन होता है उससे आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा. तो आपको पता है आपको क्या चीजें अच्छी लगती है, राइट, बट आपको ये नहीं पता क्या चीजें आपको इरिटेट करती है. तो आपको ये पता करना है, डॉक्टर ये कहना चाहते हैं. तो वील गो टू लता जी आफ्टर दैट. एंड यू नो, डॉक्टर ने इतनी सारी चीजें कहे हैं, तो मैं बहुत निराश हो गया हूँ, क्योंकि बहुत मेरी फेवरेट चीजें जैसे छोले नहीं है उसके अंदर, और बहुत सारी अच्छी चीजें, बट वी हैव टू अडेप्ट you know, for our better health, and we have to have the resilience to, you know, avoid those kinds of foods. We'll try. It's an ongoing battle, doctor, and we will definitely try to do that. We'll go to Lata ji after that. Namaste, Lata ji. Namaste. Namaste. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, good evening, doctor. Good evening, Vikas. You know, I am asthmatic, and I also have this too much of, you know, food coming up problem. So doctor told me to take Pantocid, which is helping me a lot. But he told me I've been taking it for many years. So he was telling me it's not good to take it so much continuously.
So I want to stop, but the day, I forget or something, then it's really torture. Even simple home food, because I know I do avoid all these gassy foods, but even simple home food, then I feel, the food is just coming up. So any natural things which can help me, like I take grapes, that help me a lot. Yeah. Anything else? Yeah, so there are a lot of natural foods which are anti-acidic and anti-inflammatory. So जैसे the Jain diet, Jains tend to follow a very anti-inflammatory diet, to be honest. मतलब क्या कि they don't take जो विपरीत foods है, acidic foods है, heavy foods है, वो लोग जैन लोग खाते नहीं है. मतलब कि onions है, garlic है, too much spices, वो सब चीज आप काफी कम कर दीजिए. And आपको मेन सिम्टम है एसिडिटी नहीं है, यू फील फूड इज कमिंग बैक अप, इज व्हाट यू टेलिंग, करेक्ट? रिफ्लक्स हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटासिड, यू शुड ट्राई एंड चेंज योरसेल्फ टू अ प्रोकाइनेटिक. प्रोकाइनेटिक मतलब क्या कि जो एज होती है, आपकी जो पाचन क्रिया, नसें जो होती है वो कमजोर हो जाती है. सो व्हाट यू शुड ट्राई एंड डू इज टेक समथिंग टू इंक्रीज योर डाइजेशन. तो व्हाट यू डू इज देयर इज अ टैबलेट कॉल्ड पैंटोसिड IT. IT हाँ, IT. It's called Everything is IT आजकल. IT नहीं, वो IT नहीं, ये different IT है. पर इसमें क्या प्रोकाइनेटिक होता है, वो चेंज कीजिए. And after some time you can stop the pantocid and take a prokinetic, because antacid, pantocid बहुत साल तक अच्छा नहीं होता है आपके लिए. Yeah, that's what. क्योंकि एसिड सेपरेशन हो जाती है. तो you change from pantocid IT to plain etopride. आप please chat में डाल देंगे. I'll write it down. I'll do it. हाँ, I'll do it. It's called etopride IT. You get these tablets? You easily मिलती है, बहुत easy. Thank you so much. So you're advising everyone to eat very boring food. I can see that. नहीं. It is you to follow what is good for you. That is important. Okay, thank you, doctor. That's my pleasure. Thank you, Lata ji. Thank you very much. Next, we could go to Anita ji after that, and then Indu ji and Zelia ji. So I would request all of you to just keep your questions ready, and we'll try to make it a little brief क्योंकि हमारे पास अब बस और 10 मिनट बाकी है डॉक्टर के साथ. तो अनीता जी नमस्ते. नमस्कार जी. नमस्कार. डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे 4 स्टंट पड़े हुए हैं और मैं मॉर्निंग में डेली वॉक पे जाती हूँ, और जब मैं वॉक शुरू करती हूँ तो मुझे चेस्ट में सेंटर में कंजेशन सी होती है, और थोड़ा सा जब मैं चल लेती हूँ उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ लगता है. ये मेरा डेली का रूटीन है. अच्छा, तो कंजेशन मतलब आपको पेन होता है या फिर नहीं, पेन नहीं होता. पेन मतलब ये सेंटर में जो ये जगह है ये थी. हाँ. तो ऐसे मतलब मेरी बिल्कुल टाइट सी फील होती है मुझे, और फिर मेरे को 10-12 डिकार से आएंगे, गैस पास होगी, थोड़ा सा वॉक करूंगी तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलीफ है, और मैं 45 मिनट्स कंटिन्यू चलती हूँ. आप सुबह खाने के बाद जाती हो, ब्रेकफास्ट के बाद, या खाने के पहले जाते हो वॉक के लिए? सिर्फ 1 कप चाय और रस पी खा के तब जाती हूँ. हाँ, तो ये क्या होता है ना आंटी, आप जब भी जैसे पानी या कुछ जूस या कुछ रस पी के जाते हो तो अंदर पेट में बैठ के वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है. जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रूट जो है फुल फ्रूट खाना है फाइबर के साथ. आप जूस पियो, कोई भी फ्रूट का जूस पियोगे तो उससे गैस बनना ज्यादा पॉसिबिलिटी है. तो क्या हो रहा है कि आपको ये जो खाना पीना पेट में जा रहा है वो उसकी गैस फर्मेंटेशन होके वो ऊपर आ रहा है और आपको ठीक लग रहा है उसके बाद. तो आपको ये जो हैबिट है बंद करनी है. सुबह आपको खाली पेट जाइए. हाँ, खाली पेट जाइए, या फिर आपको 1-1.5 घंटा गैप रखना चाहिए इसके बाद, तो ये ठीक हो जाएगा. कभी कभार हम एक दवाई भी दे सकते हैं उसको करने के लिए, क्योंकि आपका हार्ट की सर्जरी हुई है, स्टेंट बिठाया हुआ है. तो क्या था कि 4 स्टंट पड़े हुए. तो क्या था कि पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर हो जाती है. ब्लड सप्लाई जो आपको पेट को जा रहा है आपके हार्ट को कम जा रहा है, राइट? तो ये तकलीफ बहुत कॉमन है हार्ट पेशेंट्स में. तो ठीक है, मैं आई विल ट्राई कि मैं खाली पेट कोशिश करती हूँ. हाँ, और जूस या नहीं, जूस खाली मैं बादाम और अखरोट खा के जाऊं अगर, वो भी नहीं? हाँ, वो चलेगा, बादाम अखरोट चलेगी. ज्यादा चाय नहीं. चाय अवॉइड कीजिए, सुबह आने के बाद लीजिए. चलो, लेट्स ट्राई. अदरवाइज कॉल मी, मैसेज. आदत पड़ी हुई है चाय के बिना, आंखें खुलती नहीं है सुबह. आई अंडरस्टैंड. मैं आपको बाद में नंबर भिजवाता हूँ कुछ प्रॉब्लम है तो. ठीक है. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, लॉट ऑफ थैंक्स.
Thank you very much, Anita ji. But I would like to say something about Anita ji. Okay, she's saying that she has stents in her heart and she has heart pain. But I think उनका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए वो फिट नहीं हो रहा उनका दिल, क्योंकि वो बहुत मजेदार गाने गाती है. She comes to our Monday programs and she's a very jovial person. तो शायद that could be the reason. But one observation, डॉक्टर, मैं भी ये आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं, ओके, या हम वर्सेस हम जूस पीते हैं, तो इट इज ऑलवेज गुड टू ईट फ्रूट्स, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आई डोंट थिंक एनी ऑफ द एनिमल्स कोई जूस पीता है. सारे एनिमल्स फ्रूट खाते हैं, क्योंकि द नेचुरल वे टू एंजॉय अ फ्रूट इज टू ईट इट होल विद द फाइबर एंड ऑल ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू गेट विद इट. तो हम क्या करते हैं, उसमें से जूस पी लेते हैं और जो बाकी की चीजें हैं वो फेंक देते हैं. तो हमें भी थोड़ा एनिमल्स के जैसा उनको देखना चाहिए और सीखना चाहिए एंड ईट द एंटायर फ्रूट. दो चीज होती है, जब भी कोई फ्रूट वेजिटेबल काटते हो, यू कट योर वेजिटेबल एंड फ्रूट, कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, द गुडनेस गोज अवे. नंबर वन, मतलब if you cut your apple today and eat it at night, it becomes oxidized हो जाता है, so the nutrition value goes down. Number two, कि जैसे आपने बोला कि if you have juice, half the thing goes in your fiber and goodness goes away. So whole fruit is important. Kabhi kabar, yes, you could have juices. It is more tastier and it is better. Somebody asked me a question about milkshakes. So milkshakes also, as I said, the milk is increasingly become a very, very inflammatory food. Two concepts. There is, allergic foods, inflammatory foods, and leaky gut. Jaise aapne bola, because you have short of time, I'll just mention those three things. So there's a new concept कि बहुत सारी चीज से allergy होती है, and milk is one of them, because the way, as I said very again कि fertilizers, pesticides, preservatives, hormones, injections, कि आपके apples red क्यों दिखते हैं, आपके grapes green क्यों दिखते हैं, because it's all genetically modified crop, या फिर उसको fertilizer दिया होता है. So try and go to organic foods, try and go to natural things, try and go to a local farm where you trust the quantity or quality of your milk and your fruits and vegetables. So milk is highly adulterated. As somebody asked you, milkshakes. Milkshakes are fine, but you need to buy good quality A2 ghee cow milk. जो हमारा Indian, हमारी जो गाय भैंस होती है, this is the best thing. Ghee cows, they produce the best A2 quality milk, and go natural as much as possible. Thank you. Few questions more from some of our members. We'll go to Indu Sethi ji. Namaste, Indu ji. Hello. Yes, good evening. हाँ जी, good evening, विकास जी. Good evening, डॉक्टर साहब. Good evening. डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम है, मैं 67 years की हूँ, एंड 2015 में मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था. तो उस टाइम पर एब्डोमेन के जैसे सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपके जो ये हैं अपने किडनीज हैं, उसके आसपास गुच्छे हैं. ओके. एंड अभी ये आपको तंग नहीं कर रहे, लेकिन ओल्ड एज में आपको ये तंग करेंगे. अच्छा. तो इससे रिलेटेड डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुछ इश्यूज मैं इस टाइम देख पा रही हूँ, अपने में प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे. इंदु जी, ये क्या है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो आपको डॉक्टर समझाते हैं ना, और उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये बहुत नॉन स्पेसिफिक टर्म है. तो एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे भेज सकते हो मेरे नंबर में, आपको मैं गाइड कर सकता हूँ मैं. ओके 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 सर. सॉरी. तो आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे फिर नंबर के बाद? नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, मैं शाम को करूंगा, मैं क्लिनिक के बाद. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Indu ji. And we will give doctors contact details, and you can definitely consult him to all the members. We'll go to Zelia ji and Vora ji after that. Namaste, Zelia ji. Zelia ji, I'm not able to hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. I think there's some technical issue with that. Just unplug your earphones. Yeah. Now it's better. Yes, I took out the earphones. All right. Okay.
Yeah, the first thing is actually daily we have tea, fruit and porridge for breakfast. So I just want to know, it's supposed to be salads and fruits before cooked food, right? So Yes. should this fruit be had before tea or after tea? You should not have it before tea. The problem is what kya hota hai na ki tea and milk and your porridge all okay, but fruits are, as they both are viparit foods, but they don't get along very well. So you have sugar and acid in fruits, and you have tea mein acid hai, और आप porridge लेते हो, so it's not a great. You should give a 15-20 minute gap between the two things. So fruit should be had later, always. Okay, so I have the tea and porridge and later on fruit. Give 15-20 minutes gap, definitely. Okay. And another thing is also, doctor, which fruits should not be mixed? Normally, we have muskmelon, papaya, watermelon, and oranges. Now they're almost going out. There is no set thing of mixing. Only thing ki say ki jo citrus fruits hai, oranges and all those kind of mosambi and things, they're very citrusy kind of fruits. You should not mix citrusy fruits with other sugary fruits, generally, by and large. But there's no major ifs or buts. Hard and fast rule. Okay. Okay. Thank you so much. That's okay, my pleasure. Thank you, doctor. Thank you, Zila ji. I will go to Mr. Vora after that. And also one quick observation, doctor, would like to make and would take your suggestion here. I've also read that you're supposed to eat fruits as per the season. तो पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो सीजन होता था उसी वक्त वो फ्रूट मिलता था, क्योंकि there was no facility of refrigeration or even trying of preservation at that point of time. But अब ऐसे हो गया है कि throughout the year, because of GM fruits or because of different processes, fruits are available throughout the year and we end up eating it because it is available. तो ये बहुत बार match नहीं करता. तो is that true? Yeah, very important. So you must not rely on preservation, genetically modified, wax-coated fruits. I always insist on organic fruits. Actually, sometimes I feel fruits are worse than vegetables and worse than having something because they are so artificially processed that we need to be a little careful. So you need to have fresh seasonal fruits. There's no doubt about that. And you should not rely on old preserved canned tin pan packs. So मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे patients को भी कि don't have colored flavored tin can pack preserved foods. Go as much natural as possible. We can take the next question from Mr. Good evening, Dr. Sir. Good evening. Yeah, morning after 4 o'clock, about 3 hours workout के बाद about 8 o'clock जो मेरे आजकल रेगुलर रूटीन में पपाया, grapes, bananas ये आते हैं. Is it okay? Yes, absolutely. Whatever suits you, uncle, is fine. Okay. So I am Jain. So दिन भर में 2-3 बार खाने के बाद my last dinner is evening 7 o'clock. Some vegetable soups every day. Only vegetable soup. No other dinner. And विकास जी चले गए क्या? राइसा जी आपके लिए है कि मेरे को तो कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन मेरे चारों बेटियों को ये प्रॉब्लम है. आज का सेशन उनके लिए बहुत यूजफुल है. तो यूट्यूब तो मैं देख लूंगा, लेकिन वो उनको मैं व्हाट्सएप में लिंक वगैरह भेज सकता हूँ क्या? Yes, sure, sir. You can just contact us whenever you want to, invite your family members and all that. I will do that. Yeah, call one of us and we'll share the link with you so that they can also join in. Okay? Thank you, Dr. Sir. Very nice session it was. Thank you. Thank you. Yeah. So we'll take one last. There are just last 2 questions. Can we just take them, Doctor, quickly? Sure. Yeah. So Sushil's iPhone, Mr. Sushil, if you can tell us your question. Yes. Good evening, Doctor Sir. Good evening. मैं 81 plus हूँ, my age, and I do lot of exercise because I am ex-army officer. So I burn about 500 calories every day through exercise and yoga. And I take maximum healthy food like fibers and
porridge in the morning and fruit at about 12 o'clock before lunch, and everything is okay. Morning also, my bowel movement is very regular, very regular. I go at the same time and no problem at all since so many years. But sometimes I have to go in the evening also. So the bowel movement is there. I feel, is it natural or it is something wrong? I don't eat heavy meals also. I take very light food. Sushilji, what happens if you age and if you have a change in bowel habit, especially with blood, mucus, weight loss, appetite loss, then it should be taken seriously. If sometimes what happens in older age, you may be having a little altered metabolism, which can do this, but you should not ignore a change in bowel habit at any age, above the age of 50 especially. Because if you should test your stool for microscopic blood for infections. And also, as I said before, maybe something you change in your diet has increased your frequency. For example, कि आप दूध ले रहे हो या कुछ heavy चीज खा रहे हो, which you मैं थोड़ा ना मैंगो खाता हूँ आजकल क्योंकि सीजन है, तो उस दिन मुझे फील होता है कि शाम को हेवी हो जाता है. हाँ, मैंगो जैसे मैं पहले ही समझा, it's a very heavy fruit, very sugary, very heavy to digest. अच्छा, मैंगो I should avoid. Correct. So ये भी rarely है, say once in a month, once in a week or once in 2 weeks कि मुझे शाम को भी जाने की जरूरत पड़ जाती है. Otherwise there is no problem at all. एक स्टूल की टेस्ट करवा लीजिए सेफ्टी के लिए, और कल ब्लड है ना स्टूल, तो लोकल डॉक्टर को दिखा दीजिए. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर. कुछ करने की जरूरत. Thank you. No problem, my pleasure. Doctor, we just have one more question. So with your permission, I would like to take that question and we will end the session after that. Yeah. I'm sure, our members have enjoyed this session and they've been asking so many questions and doubts and concerns. And, you have been an absolute pleasure to talk to. We have learned so many new things, just in this 1 hour. And that is what we like in the Khayal community, when people come and, tell us so many interesting and useful things for the seniors and for the community. So in our tradition, before we go and take the last question, we would like to give you this double thumbs up that we give to all the people that we like. So thank you so much. It was a wonderful time that we have spent with you. Last question with Rupa ji. Namaste, Rupa ji. नमस्ते विकास जी. विकास जी, डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना है थोड़ा. डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड के माउथ में मतलब एकदम सूखा रहता है, ड्राई रहता है एकदम से, और वो कुछ जैसे खाना खाते हैं तो खा नहीं पाते ठीक से खाना. उनको मिर्च भी बहुत ज्यादा लगती है, और मतलब बिल्कुल मिर्च नहीं खा पाते वो. अगर हम हल्की सी कुछ लाइट सा भी डाल दे, काली मिर्च डाल दें या रेड भी बहुत हल्की सी डालें, तो वो खा नहीं पाते. तो सूखा हो जाता है, सेंसिटिव हो गया है. ड्राई, उनको हर वक्त ये लगता है कि अंदर से मेरा मुंह जो है वो ड्राई है. तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ और है? नहीं, ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटिक है. मतलब ब्लड प्रेशर भी ऐसे बॉर्डर लाइन का कह लो कि स्टार्टिंग टाइप, मतलब ब्लड प्रेशर है नहीं उनको. वेजिटेरियन है पे? हाँ, वेजिटेरियन है. कभी कभार B12 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, हाँ तो जी. भी स्पेशली जिंक एंड B12, इससे आपका मुंह सूखा हो जाता है और बार आपको तकलीफ होती है टेस्ट में भी. तो यू कैन टेक अ सिंपल एक जिंकोविट या पॉलीबियन CZS करके आती है टैबलेट, पॉलीबियन CZS. उससे क्या होगा कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो जाएंगे, जिंक भी हो जाएगा, B12 भी हो जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इन अबाउट 15-20 डेज. अच्छा, ठीक है, तो उससे फर्क पड़ेगा उनको? हाँ, पड़ेगा. और कभी कभार ये एज के साथ जो सलाइवा बनता है ना मुंह में, जी, जो वो सलाइवा नहीं बन रहा उनका. हाँ, वो कभी कभार कम हो जाता है. कभी कभार उसकी बीमारी भी होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, उसकी बीमारी भी होती है. पर बहुत अनकॉमन है, मतलब कि वो लाखों में एक जन को होती है. पहले तो ये ट्राई कीजिए आप. पॉलीबियन CZS इज द बेस्ट थिंग. पॉलीबियन, हाँ, पॉलीबियन CZS पर प्लेन नेम. ओके, मैं एक मिनट लिख लूं. हाँ,
स्पेलिंग बोलना डॉक्टर साहब। POLY POLY BION PION B for Bombay, ION polybion BION dash okay dash dash CZS PZS हाँ PZS हाँ से हाँ लिखा है। Okay. Miss Pinto has written down for you. Okay. ठीक है डॉक्टर। ठीक है। और एक चीज हाँ एक अपने लिए पूछना है, जैसे मैं नींबू पानी और हनी डाल के लेती हूँ जिस समय स्टार्ट करती हूँ तो मतलब 2-3 दिन तक तो ठीक रहता है, उसके बाद लेग्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। और उसको जब बंद करती हूँ फिर वो ठीक हो जाती है। हाँ नींबू इज लाइक अ एसिडिक फूड ना, तो कभी कभार Okay. आप पानी या हनी लेते हो तो खाली पेट मत लीजिए, पानी के मिक्स करके और खाने के बाद लीजिए, तो ये होना नहीं चाहिए जनरली। ओके। खाली पेट मत लीजिए। नहीं अच्छा खाली पेट नहीं लेना मेरे को, जैसे हाँ। मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ कि वो मत थोड़े दिन नहीं हाँ। लेना वो। हाँ खाली पेट लोगे तो कभी तकलीफ होती है उससे। हाँ वो मेरी ना लेग्स में जो है गैस भर जाती है। हाँ समझ गए। हाँ तो जिस समय मसाज वगैरह कुछ कराते हैं तो वो गैस ऊपर की तरफ आती है, वो फील होती है अपने आप को। अवॉइड कीजिए। सो लेमन वाटर जनरली आप सुबह लेना है तो पानी में मिक्स करते तो उसकी लेमन की एसिड कम हो जाती है, पर जनरली आपको ये तकलीफ होती है तो आपको लेमन हनी पानी पर खाने के बाद खाली पेट नहीं लेना है आपको। खाली पेट नहीं लेना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके माय प्लेजर। Thank you, Rupa ji. So with this, we've absolutely run out of time. और हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं डॉक्टर्स के साथ, और डॉक्टर शाह को हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डेफिनेटली इफ ही हैज द टाइम he could visit our Khayal community again. And I see that a lot of our members have already liked the session, and they have put so many positive comments, and they have put so many thumbs up because they have really thoroughly enjoyed this session. So Dr. Shah, thank you so much. Thank you. I'm very happy to come back. Thank you very much. It's been a very, very nice 1 hour that we have spent with you. We have learned a lot. It would take us maybe, if not months, at least a couple of years to understand this, but we have tried to figure this out in 1 hour with you. So thank you so much for that. My pleasure. We hope to see you again very soon. Thank you. So my contact details are available on Google. If you put in my name and Bombay, my number is 98201-90508. You can share your questions and queries with me. No problem. Definitely, we will do that, and we will also be putting up this video on our YouTube channel, and we will also put up your details there in print so that people can go ahead and take that and get in touch with you. So you are practicing in Bombay, so we have a lot of our members who would like to go ahead and visit you. We will share your number, and if you take teleconsultations, we will also have our members call you and try to take a consultation over the phone. Certainly. Okay. Thank you. So, thank you very much. So with that, I would like to thank all the Khayal community members for participating in today's webinar. It's always a pleasure to have all of you and have these amazing sessions with experts and doctors. So Dr. Rahul Shah is a true hero. He has solved so many issues and problems for us today just over the webinar. And we wish him all the luck, and thank you so much. Goodbye, everybody, and I hope to see all of you very soon. Thank you. Bye-bye.